was the name of the restaurant? Bradish Restaurant. That the name of the restaurant was Bradish Restaurant. What is the meaning of rapt attention? Rapt means deep attention. Deep attention is a rapt. For the examination, students selected multiple choice questions. For multiple choice question will come, till then I shall have to dictate at least 10. First, students, write down. Who was the writer of the story? Who was the writer of the story? Who was the writer of the story after 20 years? After 20 years. Pen. Who was the writer of the story after 20 years? Answer like O. Henry. O. Henry. Henry. O. Henry. It has been well written in your textbook. ना ना आमे खाली ओ हेनरी लिखले भी चलिबो असुविधा नाही तुमको भी चारटा ऑप्शन दे चारटा ऑप्शन भीतर गोटे ऑप्शन सिलेक्ट करियो एगुडा किंतु मु डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे किंतु तुमको ऑप्शन वाइज आसी सेकंड व्हाट वाज द टाइम क्वेश्चन व्हाट वाज द टाइम what was the time when the policeman moved up when the policeman moved up up the quit rode smartly quit 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 rode smartly answer लेखो at 10 o'clock at 10 o'clock time टा केते बेले थिला at night third question what was the policeman like what was the policeman like answer the policeman had a stalwart figure the policeman had नले कि पहले यदि स्पीड हो जाउची कहबो स्लो ट्रैकिंग the policeman had 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 a stalwart 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 figure and was very smart and was very smart next question what was the habit of the policeman what was the habit of the policeman on duty what was the habit of the policeman on duty answer lekho doing his own job doing his own job
doing his own job. Next question. What did the policeman? What did the policeman? What did the policeman used to do? What did the policeman used to do now and then? Answer. The policeman would suddenly turned about the peaceful road, turned about the peaceful road honestly. Next question. Why was the notorious criminal? Why was the notorious 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 criminal arrested? Answer lekha. Printing counterfeit 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 notes. Out there. COUNTER counterfeit FEIT counterfeit notes. Next question. Where was the man? Where was the man when the policeman found him? When the policeman found him. Where was the man when the policeman found him? Answer lekha. Near the doorway of a darkened hardware store. Next lekha pile. Near the doorway of a darkened DARKEN darkened hardware store. Next question. When did the appointment between the two friends held? When did the appointment between the two friends held? Answer lekha. 20 years ago. What do you mean by a hummingbird?
What do you mean by a hummingbird? Answer lekha. A person who does not like to stay away from home is called a hummingbird. Next question. What was the name of the assistant sub inspector? What was the name of the assistant sub inspector? Answer Jimmy Wells. Jimmy Jimmy Wells. Wells. Jimmy Wells. These are the 10 questions perhaps. Students, you must have to grasp after. ये 10टा क्वेश्चन आराम से पढ़ी नब आमर प्रोज रो बोधे 2टा चैप्टर कवर आमे करिचे गोटे होची 3 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आ गोटे स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ legend behind the legend standing yourself data gala गोटे 3 क्वेश्चन सेटा धरा के हमर चलचे आफ्टर 20 इयर्स आ पोएट्री Tapping by woods and snow evening आ गोटे थिला हमर कोन कहलो ए जो ट्रू फ्रेंड टू माय ट्रू फ्रेंड केमिति पढै दिथिल न साइंस पिलांकर सरकार हो क्या गोटे काम करिया मु सार संगर डिस्कशन करे जदि भी केवल एमसीक्यू पैटर्न करबा ताले मु भाबुची तुमको डायरेक्ट एमसीक्यू टा व्हाट्सएप रे सेंड कर दे ता भीतर पढ़ नै जीवो पढ़ाई जाई कोडा तो गोल्डन टच ने गोल्डन टच कथा कोन टू माय ट्रू फ्रेंड्स after 20 years ra हमर यूनिट 1 रो पिले पेज नंबर 9 रे हमर ऑलरेडी पांचटा क्वेश्चन डिपिक्ट करा जाई छी गोटे रहउची हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर ऑफ द स्टोरी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हाउ डज द policeman perform his duties third what picture of the wanted criminal do you get from the text fourth how did the stranger try to interact with the policeman fifth रहउची how did the policeman see the stranger's face ठीक है जे पांचटा क्वेश्चन आंसर रश्मि प्राय 3टा करनै छ और 2टा डाउट पचार छ मु बोलची सब पिला मते करनथिबे और बहुत पिला भी एब्सेंट थिले टॉपिक बुझी नांती काली जदी 11टा परे मु देखिबे तमे माने रिलैक्स होबा असले में मु बुझाई नै रुके कारण कोन कहलो वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स नवंबर डिसेंबर हे गला
तापर देख जनवरी फेब्रुआरी जाइथिबो टिके तमर प्राय मार्च बेलू सेकेंड इयर तेणु मु भावुची एनीवे जेतिकटा फर्स्ट इयर आमे पढिबा 100% किछि भी नथिले तमे लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिवली पढिदबो किंतु एमसीक्यू पई डिटेल स्टडी दरकार टॉपिक टाको टोटली धरबाको पड़े तेणु जदि आमे चाहिबा दी प्रकार टेस्ट कर दबा प्रत्येक चैप्टर मु भावुची गोटे पूरा एमसीक्यू करनबा आ गुडा कोन करबा टिके डिस्क्रिप्टिव ऊपर फोकस कले हो विथ ग्रामर तेणु ए पांचटार मु क्वेश्चन आंसर तुम को डिक्टेट कर दूची या कोन करबा तमे जा कहबो पहिले ए जो पांचटा यूनिट 5 रो रश्मि पर तीनटा कंप्लीट करिछि आ दीटा सीट आउट बोली पचारते मो जे पांचटा क्वेश्चन आंसर डिक्टेट कर दउछि ए पांचटा कंप्लीट होला परे काली जो पिला माने जे तमर लीडर थिबो ऑलरेडी मते कांटेक्ट करिवो 11 टा परे जतबे क्लास सरिवो गोटे घंटा भीतर हम कोर्स कवर कर नेबी काली संडे अछि हैना केबे भी टिके नो फास्ट पढिबा एनीवे चैप्टर उडा कवर अप करनबा तनु भाबुची क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करे भला नै तो पांचटा जे राइट होउछि जेते कि डका हितबो जेति कि बुझा हितबो तारे भीतर पिले क्वेश्चन ही आसी आउटसाइड क्वेश्चन आसीबो किंतु ग्रामर टिके या आज्ञा हाँ ग्रामर एमसीक्यू आसीबो ना ग्रामर टा तमर आसीबो आर्टिकल आसीबो आ गोटे रहिछि तुमरो कोन कहले हमर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन टा आ भर पैटर्न जो रहउछि भर पैटर्न टा ता पूर्व तुमको पढाई देबी मॉडल्स टा रूल गुडा भी तमे भी टिके जदी लीजर केते बेले पाउतबो लोकल पिला हॉस्टल पिला पळी आसीले नोट्स गुडा हमें एठी करि नबा व्हाट्सएप रे सेंड कर देले डिस्कशन कले कोइ कि नहीं बहुत शीघ्र साथिबो फर्स्ट ईयर कोर्स ना छोटी समय रे मते कांटेक्ट करो जदी तमे आसी परलो मो टाइम रे मु भाबुची पळे आसीबो दुई जण तीन जण पिला पळे आसीले इंग्लिश पई ओरिडी होबर नाही केने गोटे प्रकार लैंग्वेज पिला इंग्लिश किंतु अलगा सब्जेक्ट पई ओडिया रहउची इंग्लिश रहउची सेटा हमको प्रॉब्लम दुईटा जण को आसीबा दरकार तेणु कलेक्टिवली तमे जो लोकल पिला रहउछ टिके करेस्पॉन्ड करी मते पळे आसो एमसीक्यू पैटर्न गुडा टेक्स्ट बुक रे सामनबा प्लस ग्रामर का मध्य हम सिलेक्ट करला नोट्स दे दे मु तो गोटे थर कहि दिले क्वांटिफायर हरिका डाकी बोली आज आनिची मन करी नै जो पॉलिटिकल साइंस रो डिक्शनरी आनिची मु अछि बैक मन पकड़ अब पिले फर्स्ट क्वेश्चन how does the writer describe the atmosphere of the story आंसर लेखो ऑलरेडी क्वेश्चन अछि टिपिबा दरकार नै लिपसा आंसर लेखो राइटर ओ हेनरी was known by his excellent writing relating to ordinary life of a common man in the story after 20 years he has picturized real friendship in a practical manner in the story full stop kare in the story the writer describes the atmosphere
to be mysterious. MY, mysterious spelling, mysterious, full stop. It was 10 o'clock at night. Full stop. So the street was calm, CALM. The street was calm, comma, quiet, 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 and depeopled, DEPEOPLED, depeopled. Full stop. People had kept KEPT, kept early hours because of chilly wind, and a drizzle, 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 full stop. As a result, almost all the shops had been closed, but a few lights were coming, from a cigar store, CIGAR, cigar store, comma, a whole night hotel, and one or two tailoring shops, completing the day's work. Full stop. A policeman was patrolling. A policeman was patrolling in the street. Full stop. He was an apostle. APOSTLE. He was an apostle of duty and not friendship. Apostle in the sense जदि मन न पड़ुछि सेठी लिखि दियो भोटारी, VOTARY, भोटारी माने उपासक, जोटा जे वर्ड लगाओ किछि असुविधा नै।
Second question. These questions are of 5 marks. 5 words, 5 marks in the sense you must have to write within 70 to 80 words. Next, students, how did the policeman perform his duty? Answer. The story, after 20 years, teaches us a maxim, maxim, a maxim of humanitarian obligation, humanitarian obligation, 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 adjective of duty, obligation for the generations to come, for the generations to come, for the generation to come. Writer O. Henry, writer O. Henry is creditable, for his configuration, CONFIGURATION, for his configuration of performing duty, before personal relationship, in the topic, we found the policeman was very sincere, 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 very sincere towards his responsibility, full stop. He was in the pit, BEAT, pit, moving smartly, his smartness, full stop. His smartness was habitual. And not for show. Full stop. He went on examining. Closed doors. Closed. CLOSED. Closed doors. And making various
and making various interesting and playful events or movement कर दी playful movements with each small stick his stalwart figure his stalwart STALWART his stalwart figure and smart movements made him a fine picture made him a fine picture of the guardian of law fine picture of the guardian of law full stop it is proved that he was in service for past 18 years. 9 ଟିକେ introduction ଟା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ କଣ କି clarity ରହିବ in the sense writing skill ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ help କରିବ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ତମର actually ଯୋଉଗୁଡା refresher book ରେ ଏଗୁଡା ଦଉନି ଆମେ ଏତିକିଟା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଅଛ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ରଖିଛ they should build up their career on the basis of English honors and you must be knowing about ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଉପରେ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର କିଛି କିଛି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ ଯଦି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ନ ରହିଲା ଇଂଲିଶ ଭଲ ହବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଚାହୁଁଛ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ନ ନେଇକରି ଅଲଗା କୋଉ ଅନର୍ସ ରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କରିବ ଇନସାଇଟ୍ କରିବା in the sense maybe political science sociology history economics psychology education that doesn't matter ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ the vital thing is presentation ତମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ପଢିଲ ଧର ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆଫ୍ଟର 20 ଇୟର୍ସ ସେଇ ଟପିକ ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯାହାର ଯେତେ ଥର ଡାଉଟ ମତେ ଆରାଇଜ କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇ ଶାଲ୍ ହାଭ ଟୁ मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर तापर पर कोन करबा तुम प्रेजेंटेशन दबा तमे आसिलो सार सेठी बसिले एठी कोन करबा छिडा हैकरी एक्सप्लेन करबो सेही टॉपिक यही अभ्यास यदि तुम मानकर रहिला म तुमको माने ग्यारंटी देई कहूची हार्डली पीजी कंप्लीट होला परे परे फर्स्ट अटेम्प्ट रे गोटा ऑल ओवर ओडिसा रे बढ़िया जॉब पाई आ जानिथिबो ऑल ओवर ओडिसा रे कहू जॉब हमें प्रैक्टिकली सेटा देखुची ये वर्ष भी जो मोर 3 जण जंक स्टूडेंट सिविल पाइछन ऑलमोस्ट ऑल बिलोंग्स टू जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एवं प्लस 2 लेवल ए कांसेप्ट मोर रखिथिले से माने केते हायर मार्क रखु नथिले तांकर जानिचो अलगा पिला माने 90% से माने केते रखुथिले जानिचो 83 84 जस्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखिले से 3 वर्ष जंक मो पाखरे कोचिंग नेले मु कोन कली से 3 वर्ष जंक टोटली तांको गाइड कली सिविल किछि सरला पर भुवनेश्वर कोचिंग नेले जोटी केवल आमे दउतु स्पेशली सिविल पई फर्स्ट अटेम्प्ट रे पाइले आ कोन 23 24 वर्ष रे गोटे पिला जदी पाई गेले सिविल आ कोन ताकर असुविधा अछि मोर कहबा उद्देश्य मु कोन सब पिलांग पई तम मानक पई कैरियर अपॉर्चुनिटी काइना आमे आर्ट्स लाइन में जेतेबेले पाठ पढुचे गोटे कथा हला सब प्रकार खर्च होउछ एक मात्र वेरिएशन 3000 के 2500 टका डिफरेंस रहउथिबो रहिबा खर्च सेम
हॉस्टल फीस सेम, बही पत्र टू सर्टेन एक्सटेंट कोचिंग मध्ये हम आसुचे, घर लोक बाहर छाड़ी चंदी, आरी भितरे हमको बेनेडिक्शन आने को पड़िबो। छोट छोट घटना गुड़ाक पढ़ी नेला हमर गोटे पैराग्राफ राइटिंग अछि अंश माने कहि देखि बोली मो टिके निजे बिजी शेड्यूल रहउछि बोली केतेटा क्लास नै पानी सर मान नउचंदी बोले इंग्लिश रो से पैराग्राफ राइटिंग ता तम मन पे बहुत किछि एक्सप्रेसिव होबा दरकार। सेति पई मु तुमको प्रिंटेड दे देबी, खाली तमे ग्रुप रे मोर कांटेक्ट करू, गोटे दिटा क्लास भितरे हमें टॉपिक सारिबा। एक्स्ट्रा क्लास मु तुमको कहि दउछि मंगलवार शुक्रवार आउ शनिवार, जदि मॉर्निंग आवर रे 8 रो आसी परला 9:30 जाए जो पिला मते कांटेक्ट करा, गोटे ग्रुप कर दिया, सब पिला माने केबे आसी परिबेनी आ सब पिला मानकर केबे हेले ओरिएंटेशन सेम रहइबनी। दरकार पड़ले 8 रो 9:30 पर्यंत कि 9टा पर्यंत स्पोकन इंग्लिश टिप्स देबी, आ जो पिला माने चाहिबो एबे थारु जेनेरिक करिवो सिविल ओरिएंटेड पढिया पई ताको बोझा टिप्स। एटा लर्निंग ट्री इंडिया रा हमर होची गोटे बोनस पॉइंट। कोचिंग सेंटर जीवो खाली कोन कबे नोट को धरे देबे बसिकरी 90% की घरे बसी तो कहले पिला मन को नंबर नै तमे कांटेक्ट कर कि भाई कि भौणी हम केमिति सिविल पई पढिबु, जो माने पाई चंदी से मानकर वर्तमान उत्साह केमिति हो आ सब बळे प्रेजेंटेशन भूल हो ठीक हो तम मान को बहुत एक्सीलेंट स्पीकर अछंती इंग्लिश रो किंतु कहू ना दियटी काहे कि कहू ना दी गोटे से भलिया ग्रुपिंग हम मान को भीतर दरकार। जने पिला यदि इंग्लिश रे क्वेश्चन कला इंग्लिश रे आंसर होबा दरकार, सेही भली तम मान को भीतर गोटे गोटे ग्रुपिंग करि नियो। भलो भलो जो पिला माने तुमर संग अछंती जो मान को सहित तुमर ओरिएंटेशन अछि से मान को इनवाइट करो, एबे थारु दरकार पड़ले डेमो क्लास करंतु कि मॉर्निंग अवर मो पाखरे सेम क्लास करंतु, ऑटोमेटिकली से माने गोटे कोन करिवे फिगरेशन करिवे जे प्रकृति रे हमें आर्ट्स लाइन में पाठ करछु फ्यूचर रे करिवु। सेति पई मु तो पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी तुमको देबी, मु जो पाठ पढुछि सोशियोलॉजी डिक्शनरी देबी, इंग्लिश रो डिक्शनरी देबी। तुम टिके जेन्युइन कांसेप्ट क्लियर हो, प्रत्येक जिनिस रे कांसेप्ट क्लियर हो। हमें पढुचे इंग्लिश ले मु गोटे कॉमन सेंस कहूछि, इंग्लिश लिटरेचर रे फादर किया हमर जेफ्री चौसर। मु रे केते थर कहलेनी काई मन रहउनी जमा लेखा होनी सब बेले कोन करियो बुक रहिला इन द सेंस पेंसिल रखिबो। मु भी एबे सुधा कहूछि मोर सेटा हॉबी, जेते बेले मु पाठ पढी पेंसिल ऊपर मु बही गुटे सब बेले गारा हिके रही मु सब बेले देखे गोटे वर्ड रा आउ कोन सिनोनिम हेई परिबो की। तने इंग्लिश लिटरेचर रो फादर रहले किए जेफ्री चौसर। हमर इंडिया रो इंग्लिश लिटरेचर रो फादर किए मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद हमर रहले कोन पर्टिकुलरली जदि हमें कहबा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रो फादर। तने से जो कांसेप्ट गुडा को हमें जदि एबे सुधा क्लियर न होबा हमें तले फ्यूचर को हायर स्टडी करिवा जानिबा केमति। तो तम मानकर गोटे ओरिएंटेशन रहिबा दरकार, सार को पाखुर हमें किछि एक्स्ट्रा जानिया को चेष्टा कर सेति पई कोन करिवो वोकाबुलरी। हाउ एटा हला रिलेटिंग टू दुईटा क्वेश्चन डिक्टेट कर देली आफ्टर 20 इयर्स रो आ गोटे क्वेश्चन बे पिला दे दउची जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर टिके रहि गेला कोन कि साइंस आर्ट टू रहउची साइंस रे जोटा पढैले आर्ट्स रे सेटा कवर अप करिया दरकार। त क्वेश्चन ऑलरेडी करि देइची त मते टिके प्रॉब्लम त तुम देखा पिले आ गोटे क्वेश्चन राखी दउची व्हाट पिक्चर ऑफ द वांटेड क्रिमिनल डू यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आंसर कले the story after 20 years the criminal was a paleface PALEFACED was a paleface PALEFACED पेल हे पेरे प्रोनाउंसिएशन किंतु PALE मो तुम काहे कहली तुम राइटिंग रे टिके तुमको असुविधा हो गय हम प्रोनाउंसिएशन अनुसार सेटा होची हमर विशेष करी हमें जदी कहबा प्ले फेस्ट PALE किंतु आमे ता प्रोनाउंसिएशन होची PALE। तनु किछि ओडिया मीडियम पिला अछंती जो मन को लेके हमें प्रोनाउंसिएशन असुविधा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पर्सन having
Square judge. Square. SQUARE. Square judge. Judge. JAWS. Judge, comma. Deep and dark eyes. Deep and dark eyes. Full stop. He had a little scar. A little scar. Scar spelling SCAR. Scar mane spot ba mark. Little scar near the right eyebrow. Near the right eyebrow. Eyebrow. EYE eyebrow. BROW. Eyebrow. Full stop. He was a notorious criminal. He was a notorious criminal. Engaged. ENGAGED. Engaged in the printing of counterfeit notes. In the printing of counterfeit, FEIT, counterfeit notes. Counterfeit notes, full stop. The name of that notorious criminal. The name of that notorious criminal. Notorious, opposite of famous. Notorious criminal was not known, but still he was at large. Still he was at large. At large. 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 Here the analysis. Here the analysis of the writer is very significant. Is very significant. SIGNI. Significant. FICANT. Significant. To identify. A guilty person. A guilty person throughout the country. Which was very amazing. So far as the potentiality. Of the writer is concerned. जिते तरह जोटा जार डाउट रहबो स्पेलिंग पचारिबो टिके प्रोनाउंसिएशन वेरी करिवो इंग्लिश मीडियम पिला को प्रोनाउंसिएशन कहले हमर टिके ओडिया को पिला लेखिबा कष्ट होबो तेरे को मैं दिथर रिपीट करि कहू तमर जो क्लास का नॉलेज पर एते बड़े वो क्लास सॉल्व कर पड़े